इसको पॉज करो। यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग चालू की है मैंने और यहाँ पर हम गो लाइव जा रहे हैं। आप मुझे it says preparing to go live, setting up meeting on Facebook Live. Okay. It says preparing to go live, setting up meeting on Facebook Live. Okay. Hello everyone. Hi, good afternoon on this wonderful. Preparing to go live, setting up meeting on Facebook Live. I think we have to go mute. I will just. Okay. Hello everyone. Hi, good afternoon. Okay. Hi, good afternoon, everyone. Mic tested, technical checks all done. It is Saturday, bright afternoon. I welcome you to this exclusive webinar that we are doing here for my lovely, ambitious ladies. I have with me very, very experienced friend of mine from the financial background, Binoli here, who's here to tell us about her experiences and why is it important for women to have financial independence. As we move on into this program, I'll give you a little background about the both of us, and you may find reasons why this webinar is important for you. I come from a media background and I'm a survivor of a toxic relationship, broken relationship. This platform here of Modern Mirabai is here to support women become more independent, strong, and take complete charge of themselves. That is the spirit of Modern Mirabai. We understand why it is important for women to stand up for themselves. And that whole spirit is being taken forward by today's program here, in which Binoli is partnering me. Binoli has been in this industry for 15 years and running the firm Money Mart. She's been covered in a lot of magazines. By the way, day before yesterday, she was in Vogue magazine itself. So she's doing commendable job in the industry, and she specializes in serving women like you, like me, to become more independent. Coming back to this, hi Binoli, welcome to this show. It's really nice to have you once again. Hi, Punita. It's my pleasure to be back over here. Lovely, lovely. तो हमारे ऑडियंसेस के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं ये प्रोग्राम जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एक बीइंग अ वुमन why is it important for her to be financially independent? What is financial independence? ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन है जिनका समझ में आना बहुत जरूरी है और हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे. Over to you, Binoli. I think let's head right into the session. Right. So, see, what is independence? Okay, forget financial independence. Independence means freedom to do what you want. Okay. Now, when I add finance to this word independence, which means financially I should be able to do what I want. Okay. Let's say I get up one day in the morning, okay, and I decide that I don't want to go to work. Okay. Do I have that independence to decide for myself what I want to do? Okay. I like I like some jewelry. I want to buy that. Okay. Am I able to take that decision myself? Okay. For spending so much for that jewelry, which I like. Okay. I want to buy a laptop for my kid. Okay. It's a small expense. Okay. But can I still do it without asking somebody? Okay. So basically, financial independence means being in charge of your own money. Okay. That money could be earned through salary. It can be gift, from your parents or spouse, for somebody who's a homemaker. Okay. But are you in charge of the money which you have? Okay. A lot of us go, we are working full day, we're getting that money home. Okay. And then when that money comes to us, okay, it's been managed either by your spouses or by parents. Okay. So of course you're getting the money home, so you are independent. Okay, you're an independent woman, that's how you call yourself. Okay, but if the money which you get home is not being managed by you, you're not truly independent, right? You still have to ask your husband for the small expenses. You want to give some money to your parents, you need to ask. Okay, you want to buy something for yourself, go on a vacation, you again have to ask for it, right?
So financial independence means taking charge of your own finances. And I'm not saying that being independent means, खुद अपने आप करो, किसी को consult मत करो. I mean that maybe you do it yourself or you do it together with your father, your spouse, or whoever is managing your money. So that is truly financial independence. कमाना ही नहीं, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है वो डिसीजन भी आपका होना चाहिए. Then Exactly, yeah. called financial independence. Yes. Wonderful. I think that's much broader and wholesome a definition of what is the complete inflow and outflow of money you should be taking charge of it. What a wonderful way Yes. of thinking. And why do you think it is important for women to be, क्योंकि ये हमेशा एक मेल डोमेन ही कहा जाता है कि my father is doing it, my brother is doing it, my husband is doing it. या मैं क्यों करूँ? लड़की के लिए ये क्यों जरूरी है कि उसको भी फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, समझ भी होना चाहिए. तो एक है ना पुनीता, ऐसा है कि वर्ल्ड ओवर, not only in India, ऐसा लगता है कि kitchen is a women's domain. Okay, even if you go to developed economies, okay, still this thing is there in a lot of developed economies also. Like the primary responsibility for the kitchen is with the women, okay, and the responsibility of the men is to bring money home and take care of the finances and other things. Okay, but now we see that is changing. Okay, many number of women have started working. Okay, and even the lifestyle has changed. Okay, now like you have gone through a toxic relationship, you've gone through a separation, I have also gone through it. Okay, so this is one specific very important reason, okay, that now the divorce rates in our country has been going up at an alarming stage. Okay, a lot of times, I think all of us know of few women who basically are not privileged to get out of that toxic relationship because they are not independent. Okay, that like I have a friend whose husband actually beats her up. Okay, and this is an inner circle, so I can tell you this. But still, she's not able to get out of that relationship because she's like, where do I go? I have a kid. How am I going to support the kid? So I still stay in that relationship. Okay, so financial independence is important. Okay, and there are a lot of reasons, not only separation. Okay, nowadays women are entitled to also get a lot of inheritance from their parents. Okay, so as inheritance in terms of property. Okay, so there could be times you get a lot of money as inheritance. Okay, so you should be knowing what to do with that money. I, being a financial advisor, when I went through my separation, people were coming and telling me what to do with the money when I'm actually teaching others. Okay, so in our society, people don't leave you alone. Okay, everybody comes with their own suggestions, what to do. So tomorrow if you get chunk of money, okay, you should not be misguided. Okay, but suddenly if I tell you, okay, that now you've got this money and you start looking at your finances, it's very difficult because you're already going through a trauma at that point of time. Okay, but if you from now take some interest, okay, you'll be better prepared to deal with it when that event comes. Okay, so one is because of separation, one is because of inheritance. Okay, you also life insurance proceeds are very big. Okay, so like we have ourselves given one client 10 crores as a life insurance amount, okay, to one of a client who passed away. So you could be sometimes a recipient of these huge sums of money. Okay, fourth thing, if you see the life expectancy, okay, women generally live 5 years longer than men. Of course, it's not a general thing, but if you actually see the statistics in terms of life expectancy, तो अभी नहीं तो कभी ना कभी वो responsibility आप पे आने वाली है. Okay, and if not for you, if you are aware, you can also help your friends, your family members, help them go in the right direction. Okay, और एक और बहुत important part है sabbatical. आज today if my in-laws are not well, okay, I will be the first one to take a sabbatical and not my husband. Okay, that's how our culture also is. Okay, so you may want to take sabbaticals for higher education, sabbatical for a child being born, a sabbatical for taking care of ailing parents. Okay, तो अगर क्या होता है, इतने साल तुमने पैसा कमाया है, तुम्हारे पास पैसा है, और फिर suddenly there is no income coming because you've taken a leave. Okay, so now you don't want to ask for money because you have never asked all these years. But if you have some financial saving which you are in control of, it can be used for these purposes. So there are a lot of reasons why women should take an active interest on this. And I don't think that, but I don't think there is any negative point of that why you should not be involved that way. Very true. In fact, आपने बहुत अच्छा एक point touch किया कि
there are reasons why women should be doing it, and it's not just a toxic relationship or a divorce, लेकिन बहुत सी दूसरे भी कारण हो सकते हैं. At some point in life आपको वो डिसीजन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और उस मोमेंट के लिए क्या आप रेडी हैं. आज 5 साल बाद, 15 साल बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक आ सकती है. एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू, इन्होंने पिनोली ने बहुत स्लाइटली हिंट भी किया था, बहुत से रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं, और हम जिंदगी भर शायद उनको निभाते रह जाते हैं इसी सोच में, क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं होते हैं. वो डर हमारे अंदर का कि मेरी जिंदगी में की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कैसे करेगा, हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, you know, my livelihood, all of that is a major hindrance in a woman taking the next step of her life. Why? Because she's financially not independent. अगर हम वो जिम्मेदारी आज लेते हैं, even if your relationship is good, is what we are trying to tell you, then it's bad, then it becomes even more critical. अगर आपका relationship अच्छा है, तभी भी आपको financial dominance होना जरूरी है, is the message we are putting across. Going on from here, Binoli, if I'd say, what is the next step? मतलब पार्टनर्स के साथ ही सही, स्पाउसेस के साथ ही सही, या इंडिविजुअल कैसे शुरुआत करते हैं, ये बताइए थोड़ा. नो, पहली बार तो है ना, बहुत टाइम ऐसा होता है दैट पीपल आर स्कैर्ड, ओके, कि मैं कैसे पूछूं, ओके, that how do I ask my husband, or sometimes it's not even the husband who's doing the planning, okay, it's the father-in-law, okay. So like for example, I've had a friend whose husband passed away 2 years back, okay. She has 2 daughters, okay. The husband had cancer, okay, so we knew that, you know, this may happen sometime, so he was not well for 4 years. But still I was surprised that in spite of that there was no will made, okay. The wife still didn't know about the investments, and it's been 2 years, but still she's struggling, you know. She still waits for a father-in-law to give her money when she's highly educated, okay. तो बहुत बार कैसा होता है, तुमको पता है कि तुम्हें करना है, okay, but you are scared, or you know, you don't want to ask somebody who's managing it, because they may feel that why is she asking about this, we are there, okay. इनहिबिशन अपना ही इतना ज्यादा So होता है. first step is first of all to accept. Absolutely. Yeah. हाँ, you know, the reservation, you are ashamed of asking. तो पहले तो ये accept करो that if you're asking somebody, you're not doing anything wrong, okay. No, you're not taking the money away, you just want to be involved in, you know, one aspect of the house the way you are involved in all the other aspects, okay. So first step is first of all to see, now there will be two category of women, okay. Some women, Punita, like you or like me, would already be doing this for themselves, okay, and there may be some category of women who've never done this. तो दोनों का approach अलग रहेगा, okay. For somebody who's never done this, the first step is, you know, try to just understand what the family has been doing till now, okay. एक होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, दूसरा है कि किसको हम किसी के पास से हमने पैसे लिए हैं या किसी को देने हैं, you know, from the loan perspective also, okay. तो पहले डेटा इकट्ठा करो कि अब तक क्या हो रहा है फैमिली में, okay. Tell your husband, your spouse or whoever कि, you know, involve me. आप आपके financial planner को मिलने जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेके जाओ. I want to just understand, okay. So when you tell them that I want to understand, no, they may not mind it much, okay, because you're not taking a decision. Currently you're just trying to understand, okay. Secondly, आपको कब confidence आएगा, जब आपका knowledge increase होगा. आज अपने को कोई भी dish भी बनानी हो घर पे किचन में, अगर हमें कॉन्फिडेंस है, हमको आता है, तो हम अच्छी बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं, राइट. सो सिमिलर विद फाइनेंसेस आल्सो, तुम आपको कब कॉन्फिडेंस आएगा, ओनली व्हेन यू रीड अप अ लिटिल बिट एंड लर्न, ओके. तो थोड़ा रीडिंग स्टार्ट करो, ओके. अभी मैं नहीं बोल रही हूँ कि रोज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, वो पूरा पेपर मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, ओके. बट जो इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए हुए हैं उसको समझने की ट्राई करो, ओके. There are a lot of resources which I think at the end of the session we can also share you, or किसी को और भी resources चाहिए, they can always connect with us, we can help you learn, okay. तो थोड़ा छोटा करो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना, you know, perceive होता है लोगों को. So this is for women who have not done anything till now. ये एक first step है कि वो घुस जाओ उसके अंदर, थोड़ा समझने की ट्राई करो कि क्या हो रहा है, मीटिंग्स में जाओ, तो नेक्स्ट 2-3 साल में आप समझने लगोगे, okay. Another category of women who are doing it themselves, okay.
where Punita was, Punita, you know this well because, you know, we dealt with you last year. So where Punita was few years back, okay, like she was independent, financially independent, taking her own decisions. But udhar kya problem tha? Investment is not her domain. Okay, so that time you approach a financial planner, okay, who can actually help you chalk out the full plan कि कहाँ कितना पैसा डालना है, कितना पैसा डालना है, और तुम्हें तब पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस भी क्या पूछने हैं. तो असिस्टेंस लो किसी ना किसी की. जब कोई मे बी यू आर डूइंग इट राइट, पर अगर कोई तुमको बताता है कि आप ये कर रहे हो बराबर है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. So that is your first step. Thanks to Binoli, I could survive this entire COVID period because of some planning that was put in place just in time. And yes, it was a little difficult. We did manage a few things here and there, but I think we're back on track. And now, with her guidance, I'm again building up the reserves, that how it should be. So, Binoli, in fact, has come forward and offered an exclusive free counseling session to all the women who are watching us, to all the women of our inner circle, to check out what is it that you need, your initial first steps. One financial check she's offered. So please make use of this opportunity. Reach out to her and look into your financial health. As we say at Modern Mirabai, we are responsible. I take a pledge to take care of my health emotionally, physically, mentally, financially. And this is one aspect that we are bringing forward, which Benoli is helping us. Please take this opportunity. And as we go ahead, we'll also be sharing some resources where you can take your baby steps of understanding the financial industry. वो links भी हम नीचे share करेंगे. बिनोली आगे हम जाते हैं और आप कुछ बताना चाह रहे थे कि इनफैक्ट दैट वाज द डिस्कशन वी वर हैविंग कि अगर टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिसिटी है अगर रिलेशनशिप में, तो उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर भी असर पड़ता है. कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? तो मैं शायद एक दो examples देती हूँ, you know, that people can relate to. Okay, so of course I'm not naming anybody, but I have a client, okay, who was married for almost 8 years, 8 to 9 years, okay, and has a kid, okay, who has special needs, okay. And suddenly there were issues. The husband started, you know, going with somebody else, and they had to end that relationship. Okay. Abhi aisa bhi nahi hai, the husband is not ready to give money. Okay, the husband is ready to give her money also. Okay. So I got introduced to her, but she wasn't my client. I just got introduced to her 2 months back because her sister is my client. तो वैसा मेरी बात हुई. अभी इधर क्या प्रॉब्लम है, उनको पैसा भी मिल रहा है, पर अभी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो पैसा उनको मिला है वो इनफ है कि नहीं. यू अंडरस्टूड? तो ये भी बहुत बड़ा होता है. यू नो, इफ यू सी देयर आर एलुमनाई कैलकुलेटर्स आल्सो सम प्लेसेस के somebody is ready to give you the money, पर अगर आपको थोड़ा भी, you know, you need to do some math, right, कि इन्फ्लेशन कितना है, मैं ये पैसा एक्स प्रोडक्ट में डालूंगी, मेरा कितना पैसा बनेगा, उसमें से कितना मेरा खर्चा लगेगा फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई सेल्फ, फॉर द रेंट दैट आई हैव टू पे. इतना अपने को समझ होना चाहिए, राइट? तो इफ समबडी इज गेटिंग इनटू दिस कंप्लीटली न्यू, पैसा भी मिलता है तो भी नहीं समझता कि इसका करना क्या है. ओके, so this is what happens when you're in toxic relationships. And a toxic relationship may not just be with your husband, it can be with your parents. Okay, so again, I have, so this is actually a client of mine who doesn't get along with her siblings and her parents for some reason or the other. So, and she is in her 50s now. Okay, so bahut baar, you know, she moves out of the house when there are fights at home, and she stays into a PG or something on a rented apartment, again comes back. Okay, and then sometimes, you know, you are working, so kabhi, you know, you lose your job, there are breaks where you don't have money with you. It's not only with your husband, it can happen with your parents, right? So now, for specifically for people like these, okay, planning is more important. See, because if you have a problem with your husband, you still have your parents to fall back upon. But if you are having a problem with your parents, whom do you go to? You don't have any second source of income because you're single. Okay, so this is what, so that is why I think financial planning, मतलब सबके लिए ज़रूरी है. Whether you're single, you're married, you know, today you have a backup as your husband, your parents, maybe they are not there tomorrow.
and COVID में I think all of us have learned lot of things कि क्यों प्लानिंग जरूरी है, क्यों इमरजेंसी कॉर्पस होना जरूरी है. पुनीता, यू लॉस्ट योर जॉब, तो दैट टाइम यू नो इट वेल राइट कि वो कॉर्पस का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है. पर अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो आपको पता भी चलेगा कि मेरे पास इमरजेंसी कॉर्पस है कि नहीं है, कि अगर कल नेक्स्ट मंथ मेरे घर में पैसा नहीं आता है तो क्या मैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए एटलीस्ट घर पे माय बेसिक एक्सपेंसेस, कुकिंग, बच्चों की फीस, ये सब भर पाऊंगी कि नहीं. Yeah, yeah. I think learning from you, Benoli, I have become a very big propagator of having that emergency corpus. Matlab, I have a cousin brother, and who thinks कि I'm supposed to give everything. He's with pressure, you know. उसको लगता है कि मुझे सब दे देना चाहिए घर पे, and then he feels very empty. So I was telling him, please start creating that fund for yourself. और ये जो fund आप create कर रहे हो, डोंट थिंक यू आर कीपिंग मनी असाइड फॉर योरसेल्फ. अगर फैमिली को जरूरत पड़ी तो ये पैसा आप शायद उनको ही देने वाले हो, वही काम आएगा, लेकिन होगा तो दोगे ना. योर रिस्पेक्ट विल इंक्रीज 3 times more when you are able to help them with money in the time of need. Yes, अगर आप नहीं बचाओगे और सारा पैसा अभी ही देते रहोगे, खत्म हो जाएगा सारा पैसा दे, when it's actually needed दिल से, नो इसने तो कुछ दिया भी नहीं, मदद भी नहीं किया, जबकि आप देते आ रहे हो, ऐसा नहीं देते आ रहे हो, बट right. दैट इमीडिएट शॉर्ट ऑफ मनी इज नीडेड. तो अगर वो आप और हमारे सीनियर्स के पास, हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे एल्डर्स के पास शायद वो अभी उनके फाइनेंशियल वैल्यूज थोड़े अलग हैं. वो वो लोग अभी कॉर्पस क्यों रखना है, इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए, मेडिकल पॉलिसी क्यों चाहिए, टर्म कवर क्यों चाहिए, अभी तक उनको we can't explain and convince them and change them, but we can be the change agents ourselves if we start saving that little money. ये उनके भी काम आएगा, ये आपके भी काम आएगा. कल को आपकी बॉस के साथ लड़ाई हो जाती है, आप जॉब छोड़ना चाहते हो, आपको पता तो है कि भाड़ में गई नौकरी, मेरे पास आई कैन सर्वाइव फॉर 6 months by myself. कोविड, नो कोविड, there could be so many reasons. That So many. emergency fund is so necessary. And Punita, one more thing. See, traditionally Indians are savers. Okay, we always have the highest saving rate in the world. Okay, demonetization के time पे पता है that all our mothers remove lots of money जो छुपा के रखा था कहीं ना कहीं साड़ी के अंदर, कबर्ड के अंदर. Okay, तो एक चीज जो हम सबको सीखनी है, ओके, कि ये जो पैसा हम सेव तो करते ही है, हाउसवाइफ भी होती है तो भी सेव करती है, उनको जो घर खर्च मिलता है उसमें से जो सैलरी है वो तो खैर ऐसे भी सेव करते ही है. ओके, वो सेविंग सही जगह पे जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो आज क्या होता है, अपना सबको पता है, देयर इज समथिंग नोन एज इन्फ्लेशन व्हिच इज ईटिंग अवे आवर मनी. ओके, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. ओके, कल जो चीज 100 रुपए में मिलती थी वो आज 500 रुपए में मिल रही है, कुछ साल बाद 1000 रुपए में मिलने वाली है, और ये हम देख रहे हैं. ओके, एंड इन्फ्लेशन just doesn't mean the cost of milk or vegetables. Okay, the cost of the phone. ओके, 10 साल पहले मैंने जो फोन खरीदा था वो शायद 5,000 का था, तो भी लगता था कि वाह 5,000 का फोन खरीदा. आज 50,000 का भी फोन खरीदते हैं तो मेरी डॉटर बोलती है कि क्या मम्मा, यू बॉट दिस, यू शुड बाय एन आईफोन व्हिच इज 1.5 लाख. एक एग्जांपल है. सो इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच ईट्स अवे मनी. अभी वो पैसा अगर हम घर पे रखते हैं या बैंक अकाउंट में रखते हैं, वो पैसा बढ़ता नहीं है, पर हमें जो चीज उस पैसे से खरीदनी है उस चीज का रेट बढ़ते रहता है. ओके, तो तुम पैसा सेव करोगे ना, उससे तुम्हारा वेल्थ नहीं इंक्रीज होगा, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल नॉट गो अप, योर मनी शुड आल्सो ग्रो. ओके, सो यू शुड हैव अ विजन लाइक दैट कि ऐसा हो एक टाइम पे कि तुम कुछ काम नहीं करो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे. योर मनी शुड वर्क फॉर यू, so that whether you have a break because of a sabbatical, you are unwell, कोविड के हिसाब से काम बंद करना पड़े, या तुम्हें ट्रैवल करना हो, क्यों मैं 1 महीना ट्रैवल करने नहीं जाऊं जब मुझे पता है मेरा पैसा मेरे लिए मेरे पीछे काम कर रहा है. तो ये विजन रखना है, दैट इन्वेस्ट इन अ वे दैट योर मनी वर्क्स फॉर यू. और ये एक्चुअली करना है ना, बहुत ज्यादा इजी है. मीडिया में बहुत सारी चीजें आती है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर थोड़ा बेसिक प्लानिंग करें ना तो ये बहुत ज्यादा इजी है. So this is what I want the viewers to think on, that how they can make the best of each and every money it is saved. Okay, not that you need to have crores of rupees and then start of planning and investing. With whatever little you have, how do you make the best of it? ये बहुत important है. Very true. Very true. In fact, I'll just add on to what you said. Inflation का rate शायद 6-7% है. 6-7% is No, so inflation. अभी
No. So right now it's come down and it's only 4% because people are not spending, right? Because of COVID. Okay. And the government intends to keep it in this range, 4 to 6%. But you know, Punita, see, inflation में है ना, lifestyle inflation नहीं आता है, जो official figure रहता है. Okay. आज तुम अभी मिल्क 50 से 60 रुपीज हुआ ना, वेरी फ्रैंकली आपके और मेरे मंथली बजट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा. ओके, बिकॉज अभी सारे ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज है, कितना मिल्क एक एग्जांपल जाता है. पर यू नो द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ्स व्हिच आई बाय, ओके, ज़ारा, the lifestyle inflation, okay, Uber ka rates going up, movie tickets, flight cost for traveling abroad, phone, so this is known as a lifestyle cost. Okay, iska inflation is very very high. Okay, it goes about 10-12%. And medical inflation, okay, आज हॉस्पिटलाइजेशन में कितना खर्चा होता है और जो कुछ साल पहले कितना होता है, ये हम सबको पता है. आई डोंट इवन नीड टू से दैट इन करंट सिनेरियो. तो ये सारी चीजों के इन्फ्लेशन रेट्स आर वेरी हाई. जो एक्चुअल जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन फिगर देता है उसमें सारी चीजों का कैलकुलेशन ही नहीं आता है. तो फिर ओके, इन लाइफस्टाइल का कैलकुलेशन ही नहीं है, वो सिर्फ बेसिक्स का कैलकुलेशन करते हैं. Yeah. So actual inflation is very very high. You can take 7%, 8%, 10% also. Medical inflation is about 20%. Okay, so I'm wanting to bring the attention of the viewers here to the fact कि अगर आज 100 रुपए है और आप उसको FD या सेविंग में कहीं पर भी डालते हैं, वो 3%, 4%, 5% कितना भी कमाता है. इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है 7, 8, 10, 12% से. तो अगर वो 100 रुपए बढ़ के 107 रुपए हो भी जाता है, आपका 105 रुपए FD आपको दे भी रही है, तभी भी आपका जो 100 रुपए की चीज है उसका प्राइस अगले साल बढ़ के 112 होने वाला है, 110 होने वाला है. तो वो 7 रुपए जो बढ़ा, तभी भी वो यू विल नॉट बी एबल टू कवर अप द इन्फ्लेशन कॉस्ट विच इज 110, 111. आपको आपका पैसा इस तरीके से लगाना है ताकि वो इन्फ्लेशन के जितना मिनिमम, जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतना या उससे ज्यादा बढ़ सके, तभी तो रियल प्रॉफिट हुआ, तभी तो आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे. वरना आपको साल भर साल अपना लाइफस्टाइल घटाना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक व्हिच शी हैज हाइलाइटेड हियर. तो प्लीज इस पर ध्यान दिए कि पैसे को आइडल पड़े रहने ना दे. पर्स में रखने से पैसे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटेगी. आप उसको अच्छे जगह पे, सही जगह पर डालिए जहां पर कि इट कैन ग्रो इन वैल्यू. टुडे if you are wanting to take a sabbatical, as she rightly said, your money should be growing even while you are sleeping. Only then will you be able to. If you are always exchanging your time with money, you will always be falling short of time, and therefore you will always be falling short of money. आप कितना, जब आप नौकरी भी करते हो, यू आर एक्सचेंजिंग योर टाइम अगेंस्ट द मनी. आपको सैलरी मिल रहा है, आप टाइम दे रहे हो. कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, वेयर यू आर ऑलवेज एक्सचेंजिंग टाइम विथ मनी. इफ यू आर एबल टू find out a way where you can exchange money for money, or you come out of this equation कि मुझे टाइम ना देना पड़े लेकिन पैसा मिलता रहे, ये सिनेरियो है जहां पर पैसिव इनकम शुरू होती है, जहां पर आप इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हो. वरना कभी आपके पास टाइम पूरा पड़ने ही नहीं वाला टू बी एबल टू सर्वाइव योर इनकम. व्हाट डू यू थिंक, बिनोली? Yeah, very true. Very true. I think the biggest thing which money can buy is time. Okay, imagine you get up, like मैंने starting में ही बोला था, you get up and you can decide what you want to do. That is the biggest power of being independent and having some money which helps you do that. Okay, मुझे सोचना नहीं है कि मुझे आज जॉब पे जाना है या मेरे क्लाइंट कॉल्स, even if you're doing a business, मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है आज के दिन. और जिस दिन अपने पास ये इंडिपेंडेंस आए ना, देन इट्स नॉट अबाउट क्रोर. समबडी मे बी अ मिलियनेयर, ओके, मे बी मुकेश अंबानी, बट ही आल्सो व्हेन ही गेट्स अप ही मस्ट बी थिंकिंग कि आज ये बोर्ड मीटिंग है, आज ये करना है, वो करना है. ओके, so I'm not talking about having a lot of money. I'm talking about that peace of mind which money gives you. It can be with lesser amount, you can have a peace of mind that you can do what you want to do. Very true, very true. In fact, हाँ जी बोलिए. एंड और एक और चीज है, लाइक आजकल क्या है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इन न्यूज एंड ऑल, ओके, नाउ सिंस पीपल अंडरस्टैंड कि अच्छा पैसा डालना है, पैसा ग्रो होना चाहिए, तो बहुत समझ के डालो किधर डालते हैं, बिकॉज इट्स हार्ड अर्न मनी आफ्टर ऑल. ओके, कहीं तुम सुनोगे कि लोग बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं, पैसा डबल हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि किसी में भी डाल दिया. सो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग. ऐसा सो डोंट बी ग्रीडी कि चलो अभी मैंने समझा है कि मुझे पैसा डालना है तो मेरा पैसा कल डबल होना चाहिए.
ओके, सोच समझ के धीरे धीरे स्टार्ट दैट वे. Yeah, I think there are a lot of schemes which fool you and saying कि पैसा double हो जाएगा, you know, हाँ and यार. because we are all living in this fear and this need कि पैसा हमें बढ़ाना है, तो वो and you know don't fall a trap to such schemes which say कि quickly पैसा बढ़ जाएगा. These are actually traps, you know. So reach out to somebody who is trusted, reach out to somebody who has proven results, reach out to somebody in your network whom you think is worthy enough. One last question, Vinoli, I leave here with the audience, is with how do you trust the person with the money that you're investing in? कैसे ढूंढ के निकाला जाता है? ओके, सो एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, पहले तो है ना, देखो आप कोई भी चीज खरीदते हो, ओके, इफ यू गो लेट्स से गो टू अ डॉक्टर, ओके, वी कॉल आवरसेल्व्स एज फाइनेंशियल डॉक्टर्स. फर्स्ट थिंग, ओके, फिर कितना इजीली आपको समझा पा रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है. आज हम क्यों एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं? बिकॉज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है. ओके, अगर आप कोई भी प्लानर के पास जाओ एंड ही इज लाइक ओके नो या इन्वेस्ट करो एंड यू आर डन, ओके, देन ही इज नॉट द बेस्ट वन फॉर यू बिकॉज यू हैवंट अंडरस्टूड ओनली व्हाट ही इज डूइंग. ओके, तो go to somebody who can first of all explain you what he or she is doing. Okay, because only if you understand you will be confident and you will actually execute. Okay, otherwise आप क्या करोगे? एक डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं ठीक लगता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, तीसरे के पास जाते हो, और इसी में फिर कुछ नहीं करते हो बिकॉज कुछ समझा ही नहीं. 80% of the women don't invest because they don't understand. Okay, and this is actually just my observation with the number of women that I deal with. Okay, so these are women who are also working in banks and all. Okay, so ऐसा नहीं कि finance नहीं समझता है, investment नहीं समझता है, और लगता है कि मैं कुछ करूंगी और गलत करूंगी तो घर वाले बोलेंगे यार क्यों किया, उससे अच्छा हम कर ही रहे थे. ओके, तो इसलिए go to a planner who can first of all explain you what he or she is doing. Okay, secondly, into our industry there are a lot of qualifications. Okay, कोई भी financial planner नहीं बन सकता है, तो उसका क्या education qualification है, उसके क्या registration है, licenses है, ये आप देख सकते हो, मांग सकते हो. Okay, third very important rule which I follow in my business is, you know, only recommend something where I have my own money into. ओके, तो जहाँ पे मेरा पैसा है वहीं पे मेरे क्लाइंट्स का पैसा हो. ओके, एंड सो आस्क योर प्लानर आल्सो इफ दे हैव देमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टेड इनटू द प्रोडक्ट व्हिच दे आर रेकमेंडिंग टू यू. खुद का पैसा अगर डाला है तो कुछ रिसर्च करके ही डाला होगा, तो आपका डूबेगा तो प्लानर का भी डूबेगा. तो यू नो लाइक हाँ, दिस इज लाइक एथिक्स, यू नो, मैं मेरा पैसा डाल सकती हूँ तो फिर क्लाइंट का भी डाल सकती हूँ, पर अगर मैं मेरा ही नहीं डाल सकती हूँ तो क्लाइंट का कैसे डालूं? ओके, fourth thing, understand from the planner that how do they make money. Okay, so again this is very transparent in the industry. इतना transparency I think एक ही industry में in our country where each and every product में the planner is liable to give disclosures of how much money they are making. Okay, fourth thing, lot of planners take a small fee from you. Okay, अपने country में again ये culture है कि तुमने LIC में पैसे डाला, LIC का agent passback देता है, commission वापस देता है, ये सब अभी भूल जाओ. Go to a planner who's ready to charge some fee from you, but is ready to make an exclusive blueprint for you, because what your requirements are may be totally different from your sisters or your neighbors or your colleagues requirement. तो एक basic financial plan बनाओ. कोई आपको कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करता है उसमें मत जाओ, कोई बोलेगा ये म्यूचुअल फंड ले लो डबल हो जाएगा, ये शेयर ले लो, प्लीज डोंट डू दैट. थोड़ा सा पहले प्लानिंग करो, खुद करो या प्लानर के पास करो, और फिर इन्वेस्टमेंट करो. इन्वेस्टमेंट करने की घाई मत करो, पहले समझो, प्लान बनाओ एंड डू द इन्वेस्टमेंट. Very true. And जो प्लानर का कि अगर यू नो इफ इट्स अ सिंगल पर्सन फॉर एग्जांपल, कल वो नहीं रहा तो who will be there for you that way. So I generally recommend going, not investing with banks. Okay, you can people should go through any planner like me, or there are many like me, okay, in the industry. बिकॉज बैंक में क्या होता है, एक आरएम होता है, वो आज आपको कोई प्रोडक्ट समझाता है, फिर वो कल निकल के कोई और बैंक में चला जाता है. ओके, क्या बेसिस में उसने आपको समझाया वो फॉलो अप नहीं रहता है. सो आइडियली गो विथ यू नो पीपल हु आर इंडिपेंडेंट, जिनका एक खुद का काम है, तो वो हमेशा रहेंगे, तो वो आपके साथ वो पर्सनल कॉन्टैक्ट रहेगा दैट वे.
Very true. I think few key points और pain points जो आपने highlight यहाँ पर किए हैं, मैं just reiterate कर रही हूँ उनको. मेरा रिलेशनशिप मैनेजर बाय द वे वो कंपनी छोड़ के कब का जा चुका है. आई ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट टू हिम. आई एम नेवर एबल टू, क्योंकि उन्होंने कोई लैंडलाइन नंबर दे दिया है. अल्टीमेटली बात हो पाती नहीं है. And in spite of being a privileged member with them, I'm never able to communicate. So, you know, how much of personalization are they really giving you is questionable. The recommendations are questionable because they have their loyalties with the company and not with the customer, right? Going with an independent consultant just ensures कि वो आपका benefit और सिर्फ आपका benefit ध्यान में रखता है. दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि जब आप independent उनके साथ जाते हैं, their exposure is much higher and neutral for the entire industry as such. And as she rightly said, if they have their skin in the game, it makes it all the more important. Wonderful. Thank you, Binoli. It was a wonderful, wonderful session. It's already been half an hour. I can't believe it's been a superb, superb conversation with you. I'll just check if there are any questions from the audiences. I can't see questions as of now, but to my audiences, if you have any questions for Binoli, I can take them on for you. I can get them answered for you. She is a part of the inner circle herself, and she can answer your questions if you post them below this live, even after we are off. Even after once the session gets over, she'll be having access to your questions and will be answering you. Second thing, we will be sharing some material with you for your baby steps into this finance industry. Please feel free. Please feel empowered to start this financial journey for yourself. And third, as she offered, she is offering a free counseling session, a free health, a financial health checkup for you guys. And this is only in for the Modern Mirabai circle. Please make the best use of this opportunity. To wrap up this session, I'll give you the three key takeaways. One, there are many occasions when a woman can be loaded with this responsibility of taking a financial decision. Be prepared for that moment. Second, when you are asking a person to get, when you are asking the people in your family to get involved in the financial planning, you should not be ashamed. You are not taking the money and going away. You are just wanting to get involved, get literate, and probably they may respect you for it, for the fact that you have taken the first step of partnering them. You know, kal ko jaake wo आपके हस्बैंड, आपके फादर या आपका ब्रदर, इफ दे फाइंड द कॉन्फिडेंस इन यू कि हाँ मैं पुनीता के साथ ये डिस्कशन कर सकता हूँ, आई थिंक they'll slowly open up. अभी तक क्योंकि हमने किया नहीं है, ये हमारा भी डर है और ये उनका भी डर है कि शायद ये समझ नहीं पाएगी, कर नहीं पाएगी. And third, final takeaway here, which I may give, is choose carefully who your financial planner is. कई बार हम लोगों को ना, more than anything else, it's the subconscious mind. हमें बचपन से ही कहा जाता है कि तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगा, तुम छोड़ दो, तुम्हें फाइनेंशियल समझ नहीं आएंगे, छोड़ दो. So we grow up with this subconscious conditioning in our mind कि तुम्हें आएगा ही नहीं, और हम मानने लग जाते हैं कि हमें नहीं आएगा. आप एक छोटे बच्चे को बोलो तुम काले हो, तुम काले हो, तुमको ये व्हाइट शर्ट सूट नहीं करेगी, वो बिलीव करने लग जाता है कि हाँ ये सच है. तो शायद वी विमेन ऑल्सो हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि हमें फाइनेंस समझ ही नहीं आएंगे, बिकॉज हम बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं. एंड हियर वी आर सेइंग इट्स ऑल इन योर माइंड्स. Please break your mental barriers, come out. There is so much of sunshine. Take charge of your life, take charge of your financial. We are here to help you in becoming more independent. And कोई चीज मुश्किल नहीं है अगर आपने मन में ठान लिया है तो. That's all that we have to say. We are always here. This is your community. You are really valued. You are a precious part of this community. This support group is only here to make you better, more empowered. And I want to see the spirit of modern Mirabai in each one of you here. So thank you so much, Binoli. It was wonderful. Thank you so much, my audiences, for being a part of this webinar. It is so enlightening to have you each time here. And as we come back, if you have any questions, please drop in here. We are sharing some resources, and
look forward to knowing how did you like this session. Hooray. Wonderful. Have a nice Hopefully. weekend, guys. Take care, Binoli.